So, good evening, all. My name is Nilash Sharma and from NJ Chandigarh. I welcome to all of you in this NJ Digi Talk on partner panel discussion on NJ Family Need Tools. Right. So, we at NJ have many productive tools which we have developed for the use of our partners and clients and to make the most use of it and to utilize them in a more efficient manner. Family Need Utility is one of the productive tool which is widely accepted by most of our customer. Most of our partner has utilized it in a very big manner, and some of the partners have got a very good experience of using this tool, and they have got a very good business out of this tool. So today we are going to share with you all a very wonderful insight by our panelist who is going to participate in this panel discussion. They are the finest people in this particular tool, those they have used this tool in a very big way और उनको इसका बहुत अच्छा experience है. So today we are going to learn a lot of things from these panelists. So today's DigiTalk we have three panelists. So let me introduce those three panelists in a one by one manner, but not in a particular order. So I'll introduce my first panelist for the day is from a partner from Hyderabad. So मेरा पहला पैनलिस्ट है मिस्टर नरेंद्र कुमार फ्रॉम मानवी वेल्थ. ही इज फ्रॉम हैदराबाद ब्रांच. नरेंद्र इज वेलकम टू द पैनल. नरेंद्र जी. Thank you. So Narendra is an MBA in finance and he's having 16 years of work ex. Manvi Wealth is founded in 2013. Currently, Narendra is managing close to 250 crore of AUM with live SIP of 2.65 crore. Narendra is managing close to 2000 plus families across the country, and he is on a mission to educate 10 million families on this financial literacy. So I welcome to Mr. Narendra once again in this panel discussion. My second panelist is from City Bombay. Many of you know him very well. He has been the speaker on the TVC also. So Mr. Srinivas D he's the managing director at Snowball Financial Services Private Limited. यदि मैं आपको श्रीनिवास जी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन को एलाबोरेट करूं तो श्रीनिवास जी इज अ स्पीकर एंड इज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर. ही इज आल्सो अ मैराथन रनर. He and his team is managing close to 1500 plus clients across the globe. His head office is in BKC and he's also have a branch office in Bangalore. His personal finance is his passion to, and he's spreading a lot of this financial literacy through this personal finance program. He has conducted many seminars on many various organizations like Mercedes, TCS, Accenture, IBM, Global Foundries. So many, the list is long. Therein he has gone and given the long talk on this personal finance. If I talk about his education, he is the engineering graduate in electronics and communication. He's also MBA. He's also CFP, and he has done many other certification like chartered insurance advisor. As I told you, Srinivas ji is also a marathon runner, right? So he has run more than 50 half marathon. He has also run 3 full marathon, and he has also run ultra marathon, which is the toughest marathon called Comrade, 90 kilometers of marathon hill run in South Africa, and this is called popularly Ultimate Human Race, right? So I think so very few people have run this particular Comrade run, right? But he is one of them. So I welcome Srinivas ji for the panel. Yeah, thank you. My Thank you third very much. panelist is from city Pune. He is the partner who is a ex-Indian Army man. He is a retired Colonel Sunil Tandale. He has served this country with 21 years of his time he has spent in Indian Army. He has served in Kumaon Regiment. After an eventful and rewarding combat career across the country, he embarked on equally important mission in 2007, the mission of empowering individuals and families to secure their financial future through a value-driven process of financial planning. Joining the setup founded by his wife Anita Tandale in 2007, he committed himself to build their firm Renaissance Wealth as a credible professional enterprise. His firm name is Renaissance Wealth. Colonel Sunil is an avid reader of multiple subjects. He is also a life coach and he is a motivational speaker. Upholding his conviction about India's momentous growth and glorious future, he is a leading Renaissance Wealth to make a humble contribution in that direction. Currently, Sunil ji is managing close to 220 crore of AUM with live SIP of 2.20 crore.
He's managing close to 1,000 families, and he has covered more than 600 families into this FNU utility, right? So welcome Sunil ji to the session. Thank you. I come back to Srinivas ji again. I have not spoken about Srinivas ji about his AUM. So Srinivas ji is the person who is the youngest, I think so, among the panel, and he has done his total AUM of 250 crore with live SIP of 2.65 crore, जो उन्होंने पिछले 7 सालों में किया है. Out of this 7 years, 5 times he has been nominated in PVT for the rewards, for particular awards also, right? He has also been the speaker in PVT events. So once again, I welcome to all the panelists in this panel discussion, right? So before I just begin with, I would like to just set the forum by saying that all the three panelists is having more than 240 crore of AUM and more than live SIP book of close to 2.4 crore, right? So the average SIP book of these panelists is 2.4 crore. Average AUM of these panelists is 240 crore plus, which is 1% of our live SIP book, right? So this is the staggering number, and the number is quite convincing, and it looks your conviction towards the business of this mutual fund industry. And I believe, like as we have found your data, the data in which we have looked at, after that just we find out that you are the, I think so, early believer of using NJ tools, right? So my first question comes to Srinivas ji, to you. मैं आपसे सिर्फ इतनी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे इसलिए है कि आपने 1500 फैमिलीज में, आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज कवर्ड इनटू एफएनयू, आपने काफी लोगों का एफएनयू किया है. तो कैन यू जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट योर बिजनेस इंपैक्ट आफ्टर यूजिंग दिस एफएनयू टूल? आपने इस एफएनयू टूल के थ्रू आपको क्या बिजनेस इंपैक्ट हुआ है, एंड हाउ इट हैज हेल्प्ड यू टू ग्रो योर बिजनेस, एंड व्हाट सेंस इट हैज, any good experience about that business growth you can just share with us? Yeah, sure. Yeah. So basically, this after this tool earlier, हम इसको goal mapping करके बुलाते थे. So this tool has really impacted our business in a very big way, right? So क्योंकि क्या होता है, generally an investor is always anchored towards return. कितना return मिल रहा है मेरा investment के ऊपर, and on the current value, मैं इतना साल से कर रहा हूँ, उधर ही value है, right? So this tool helps us to make the client anchored to the goal from a return, because the goal is something, this is what is the end destination we are promising him, that this is a promised land, we'll try and help you reach there, right? But unfortunately client बार speedometer में आ जाता है, right? So वो return में चक्कर पे, and we all know that return is volatile and it is always going to change, right? And that is something which is not in anyone's control, right? So goal mapping होने से क्या होता है, वो बहुत बड़ा it becomes a scoreboard, like अपना क्रिकेट में scoreboard हो जाता है. So client को exactly पता चलता है, ठीक है, this is what I had set, and उसके लिए मेरा current speed में मैं इधर तक पहुंचूंगा, ये गैप है, वो गैप के लिए additional SIP कितना चाहिए या additional lump sum कितना चाहिए, right? So this is beautifully shown in a very visual way, where client can get a real clear picture of his journey, right? So इसमें क्या होता है, मतलब बहुत ही clarity आ जाता है client के लिए as well as for us. So for example, one thing what we do, I have around 4-5 RMs with me. हर RM हम हर दिन 2 client को फोटो भेजते हैं, उसका गोल प्रोग्रेस का फोटो, saying एक सिंपल लाइन लिखते हैं, your family needs progress, ऐसा, right? So बहुत सारे client देखता रहे, ठीक है, काम को 10,000 SIP पढ़ा दो, 5 लाख का लमसम डाल दो, right? By just doing this simple activity of regularly updating the client about his progress, because not every client will look into their app, right? Which also we're trying to cultivate that habit, but अभी भी वो कम है. So हम अपने तरफ से हम 2 client को हर दिन we try and do the discipline. At the same time ऐसा नहीं है, मतलब कभी-कभी हम भी थोड़ा बहुत आलसी हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं, but we try and have this habit, and again, some of the partners, where I was interacting with PBT or others, में लगते लोग को लगता है, अरे ऐसा कैसे बन गया, आपने कैसे गोल डाल दिया. So what I feel is there is a problem with the mindset. क्या होता है, हम सबको ना परफेक्ट करने को ट्राई करते हैं. हमने क्या किया पहले, of course before the family needs progress came in also, we spoke about goals. At that time तो कुछ ये सिस्टम नहीं था डालने के लिए. हमने क्या किया, एक सिंपल एक चालू किया, दैट हर क्लाइंट का एक 10 साल का पीरियड हमने लिए, ठीक है, because 5 साल is too early, 15-20 years becomes a little too long for a client to visualize, right? Based on the client, our estimate of client potential, किसी क्लाइंट को 1 करोड़ का गोल डाल दिया, किसी क्लाइंट का 3 करोड़, किसी क्लाइंट का 5 करोड़, किसी क्लाइंट का 10 करोड़,
राइट? वैसा हमने एक टाइम क्या किया, सबका गोल बना दिया. It is a, I'm not saying that this is a way to do, but I'm saying for the partners who have not done, this is a kind of a shortcut to make it at least start somewhere, right? And बाद में हम कभी फोटो भेज से कोई क्लाइंट बोलता था, अच्छा ये ऐसा मेरे को पर्सनलाइज कर सकते हैं क्या, या मेरा I want to have a separate goal for education and retirement, right? So they were like, okay, you tell me how you want to do it, then we can just edit it. It is difficult to edit a blank sheet, right? So if you don't put anything, what will you edit? At least पहले तो डालने को चालू कर दो. Then किसी client बोलते हैं I'm okay with this, I'm finding in one goal, wealth creation is we kind of focus on wealth creation as one goal, right? So based on clients feedback, we change it to retirement, or we change it to 2 goals or 3-4 goals, whatever works for each client, right? So this way, for example, any new client meeting we do, one of the client goal mapping, the photo I have it in my slide, all prospective or any seminars we do, we always show that case study. This is the client, ये South Indian था, 5 साल पहले अपने पास आया. At that time वो सिर्फ FD में रखता था पैसा. Then मैंने asked him why you want to invest. इन्होंने बोला Srini, by the age 45 मेरे को 7-8 लाख रुपए मंथली इनकम आना चाहिए. There I am IT couple, right? So इन्होंने इन्वेस्टमेंट चालू किया. लास्ट 5 साल में 1.5-2 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट किया. अभी करंट वैल्यू 4 करोड़ है. ये स्पीड में 14.5 करोड़ उसको हो रहा है. एडिशनल ये गैप के लिए इतना सिप चाहिए, इतना लमसम चाहिए. ये स्टोरी में हर क्लाइंट को, नया प्रोस्पेक्ट को बता रहा हूँ, राइट? इनफैक्ट इंसिडेंटली क्या होता है, आई एम आल्सो पार्ट ऑफ अ एमसीए मेंबर. उधर आई मेट अ इंडियन क्रिकेट मेंबर, सो ही इज अ यंगस्टर, ही इज आल्सो पार्ट ऑफ राजस्थान रॉयल्स. सो ऐसे बात हो रहा था. तो प्रोस्पेक्टिंग तो जैसे मैंने सीखा हर जगह, तो प्रोस्पेक्टिंग करके धंधा बढ़ा है. So I just happened to talk to him, and then he said, why don't you sit? वो कुछ दिखा रहा था, ये क्या लगता है आपको वगैरह. Then we spoke, and 1-1.5 घंटा प्रेजेंटेशन चला. उधर मौका मिला तो मैंने, I was showing him. Then मैंने ये गोल मैपिंग इसके ऊपर बात किया, फैमिली नीड्स. I asked him, this is your scoreboard. आप क्रिकेट में आप स्कोर कार्ड देखते हो, स्कोर बोर्ड देख के आप देखते हो टारगेट में रीच कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, राइट? तो आपके पास कोई दिया क्या? उन्होंने बोला मैं IIFL के साथ करता हूँ, इसके साथ कोई मेरे को रेकमेंड किया. ये कोई ने आपको दिया क्या ऐसा? So NJA utilities, no one is giving in the country, right? So that's why we are very, very excited about this tool, because it is unique and ekdam simple hai, and it gives a lot of credit. Yeah, this is what I wanted to share. For me, it has impacted in a very, very big way. So fair enough, श्रीनिवास जी. I think so एक अच्छा लर्निंग आपसे जो जानने को मिला वही मिला कि आपने एक क्लाइंट का फैमिली नीड का जो गोल मैपिंग करते हो, वो आप दूसरे क्लाइंट को, प्रोस्पेक्ट को भी दिखा के उसको अपने अंदर लाने की ट्राई करते हो. सो यू आर यूजिंग फैमिली नीड यूटिलिटी नॉट एज अ टूल, यू आर यूजिंग दिस एज ऑल्सो टूल टू अक्वायर द न्यू कस्टमर. सो इट्स अ गुड लर्निंग. एक क्लाइंट का दिखा के भी दूसरे क्लाइंट का बिजनेस लाना इज ऑल्सो a skill set. So thank you for your sharing, sir. I think so, Narendra ji. Now I would like to have your views with regard to this business success in your case after using this utility. Because I think so you have also a big number of people, right? Your family need gap is, I think so, the largest among all these three, and you are using it like anything. So can you share your views in this, sir? Sure. So as Srinivas sir said, like family need utility is the most and the backbone of our business. Like for us, family needs, the discussion of family needs comes before the investment. We start our discussion with we have a calculator called 3-event planner. We got this calculator even from NGO only. So with that calculation only, we start the discussion with the customer. First we will ask the customer, like, first let's calculate your needs, and then we'll start the discussion. So our discussion starts after figuring out the needs, be it like child education, child marriage, or retirement. These three are the most important things which we start discussion, and then we take them to the execution wise. So practically to speak, in what way this helped us and this is helping us, I'll take my case itself. When I've started my investment journey, we don't have any family need utility, or there is no possibility of tracking these goals. So few years later, like, we have started it, and in the initial days we were also hesitant to start this, though we were discussing with the customers aggressively, but we couldn't somehow not able to start executing this or updating this in the client desk or the partner desk. But once we started tracking this, and once we started updating this, one day I have checked my family need report itself. Then I realized, like, what I'm doing.
So I myself could able to see a gap of a huge figures for my retirement. So that is a striking point for me where I have started my increasing my SIP just because of the goal sheet which I have. From then religiously we follow in our organization that every customer once he was onboarded, his family needs to be updated and that report has to be sent to the customer. So once after sharing this report, mapping the investment to their goals and sending this to the customer, our team member will call the customer and we will ask them to check, did we rightly figured out the needs or do you want any changes to be added or modified in the needs? So there, like we start that journey, and once in 6 months we try to track the goals and we remind the customer. And as we know pretty well, like this is going to help us anchoring the customer. So customer will not, generally in our case, like customers rarely talk about returns. They do need returns with the mutual fund investments, but because of this tracking, because of this goal planning, because of this family need utility, they rarely talk about returns. Though in one or the other scheme, if they were not satisfied with the performance, still they don't ask us anything. So they just ask us how much more I need to add for this goal. And there were instances where customer they themselves will call on every April, and they say like, last year we have increased it for this goal. Why can't we add a few amount for the other goals as well? So they keep tracking and they keep reviewing their goals and they ask us, so what goals to be updated now and to which goal we have to fill it now. So this is seriously a great productive tool for the advisors. And many of them might have a conception that family need utilities for only middle class people or just above middle class people or below middle class people. So please do not have that conception. Family need utilities for everyone. Even I can share my recent example. Just 3 days back, I met a customer who is an ultra HNI in our portfolio. So earlier, like I've guided him to create few goals for his daughter and his retirement. So recently, when I met him, he himself asked me, Narendra, you have shared a goal sheet few years back. What happened to that goal sheet? So initially, I have created a goal sheet, but later I've stopped discussing that goal sheet to the customer. Why? Because I felt like he's an ultra HNA customer. Does he really bothered about the goals? He's having good amount of corpus with him already. So, but when he asked the goal sheet, when I showed him, so this is the gap we had. Immediately he said like, let's modify this goal and let's increase the requirement also. And he promised that he's going to give me another 50 lakhs check in next 1 month just because of goal sheet. Maybe for few people this might be looking exaggerating things. No, this is really a fact. So Right. family So utilities for everyone. good. Please do not any filters. या ग्रेट लर्निंग मिस्टर नरेंद्र. आपने काफी अच्छी बातें शेयर की, आपने खुद के ऊपर वो इम्प्लीमेंट किया. सो मेनी ऑफ आवर एनजे पार्टनर्स आर आई थिंक सो नॉट यूजिंग दिस टूल फॉर देमसेल्फ आल्सो, राइट? सो द लर्निंग फ्रॉम नरेंद्र इज दैट कि यदि आप अपना खुद का भी डाल के देखेंगे तो यू विल कम टू नो दैट कि व्हाट अमाउंट ऑफ एसआईपी, व्हाट अमाउंट ऑफ लंप सम यू नीड टू पुट to achieve your financial goal, which as a financial advisor you have not done for yourself also. The second good learning which Narendra has spoken about कि इसने आपको market related events को भी answer करने में help करता है. मतलब if there is a event like currently there is a news going on for some bank, Silicon Valley Bank, right? So people start talking about that and they start talking about like we will stop the SIP now. मैं अभी SIP बंद कर देता हूँ, then I will start. तो FNU की वजह से शायद I think so इस टाइप की इवेंट्स में भी इट हेल्प्स यू, आपका एसआईपी स्टॉपेज होने से बचता है. सो थैंक यू नरेंद्र फॉर द शेयरिंग. नाउ आई कम टू यू सर. सुनील जी, मैं आपके पास आता हूँ. आपने आपके जीवन का 21 साल बहुत ही अनुशासित जीवन जिया है, राइट? काफी आपने चैलेंजिंग टाइम में आपने काम किया एंड उसके बाद आपने बाय डिफॉल्ट एडवाइजरी शायद प्रैक्टिस में नहीं लाए हो, बट बाय चॉइस तो आपका ये नहीं था, बट आप आ गए कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में आ गए. उसके बाद आपने ये एफएनयू को बहुत ही अनुशासित तरीके से यूटिलाइज किया है, जो हमने आपके साथ डिस्कशन किया था. सो योर थॉट इनटू इट सर, योर एनी गुड एक्सपीरियंस व्हिच यू हैड एंड द वे इन व्हिच यू आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर टूल. ओके, थैंक यू नीलाश. नमस्कार टू यू एंड नमस्कार टू एवरीवन. तो मैं 2007 में जब फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में आया तो ये बाय चॉइस ही आया. और
सेना में जब कॉम्बैट आर्मी में मैं अपना काम कर रहा था, तब देश की सुरक्षा का एक छोटा सा जिम्मेवारी का हिस्सा संभालता था और मुझे लगा कि इस सुरक्षा के दायरे को आगे जारी रखते हुए कोई ऐसा काम किया जाए जिससे अन्य तरह की सुरक्षा, जो आर्थिक सुरक्षा है, वो लोगों को मिले। तो ये विचार था और वहां से जब ये यात्रा शुरू हुई तो उस यात्रा में कई सालों पहले जब फैमिली नीड यूटिलिटी टूल नहीं था, तो हमने अपने क्लाइंट के साथ बैठ के उनके जीवन के बारे में बात की, उद्देश्य उनके निर्धारित किए, कितना उसमें निवेश करना पड़ेगा, इस चीज की बातचीत की। तो बातचीत करने के बाद जरूरत और क्षमता और इच्छा, जरूरत मेरी 50,000 की SIP की है, क्षमता मेरी 40 की है, लेकिन इच्छा मेरी 20 करने की है। ये तीनों के अंदर गैप होता था और वो गैप कवर करने के लिए काफी फिजिकल एफर्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम और समझाने में लगता था। तो जब फैमिली नीड यूटिलिटी आ गया तो स्ट्रेट वे ये सारी चीजें जो निर्धारित की गई है चर्चा में, उनको हमने ट्रांसफर कर दिया सिस्टम में, जो कि डायनामिक है। डायनामिक यानी कि जैसे निवेश होता है, जैसी मूल्य बढ़ता है, वैल्यू बढ़ती है पोर्टफोलियो की, वैसे वो ऑटोमेटिकली उसका डायनेमिक रियल टाइम स्टेटस बताता है कि इतने डाले, अभी इसके इतने हुए हैं और इन गोल्स में इतना अभी इतनी राशि बनी हुई है और इतना करना बाकी है। तो ये जब सारा डायनेमिक स्टेट में रियल टाइम स्टेटस मिलने लग गया फैमिली नीड यूटिलिटी में, तो इसका एक बहुत बड़ा लाभ या उपयोग ऐसा हुआ कि जो आमतौर पे हम समझ के चलते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी कि इन्वेस्टर को हम सारी चीज समझाए, बताए, पीछे पड़े, उनसे करवाए। तो मेरा हमेशा से ये मानना है कि इन्वेस्टर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लाना बहुत जरूरी है, या जो भी निवेशक है, जो भी कस्टमर क्लाइंट है, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ट्रांसफर कराना ये बहुत बड़ा काम है और बहुत जरूरी काम है। और उसमें सबसे बेहतर, सबसे उम्दा और सबसे उपयुक्त टूल है फैमिली नीड यूटिलिटी, क्योंकि जैसे ही आपने पूरा आपका फैमिली नीड प्रोग्रेस रिपोर्ट बना दिया, पूरा अपलोड हो गया, उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करना बहुत आसान हो जाता है। चूंकि ये डायनेमिक है, चूंकि रियल टाइम है, और जब हम ये बताते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि आप इसको देखते रहिए, अभी पीरियोडिकली आपको खुद पता चलेगा कि इसमें प्रोग्रेस कितनी हो रही है, इसमें काम कितना करना बाकी है, और क्यों करना है वो तो निश्चित है, क्योंकि गोल आप ही ने सेट किए हुए हैं और ये आपकी ही आशा आकांक्षाओं और सपनों पे आधारित है। तो एक इमेजिनरी स्टेट ऑफ माइंड से लेकर, या हमें बता रहे ये हमारे प्लानर है, एडवाइजर है, तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये माइंडसेट से निकल करके ये मेरा पैसा है, मेरा प्लानिंग है, मेरे ड्रीम्स है, और इसलिए मुझे इसके लिए दोनों चीज लानी पड़ेगी, अनुशासन और साथ साथ इसमें जिम्मेवारी मेरी अपनी लानी पड़ेगी। यहां तक पहुंचाने का पूरा काम फैमिली नीड यूटिलिटी हमारे लिए करता है, सबके लिए। परफेक्टली सेड सर। सो आपने अपने अनुशासित जीवन को पूरी सही तरीके से FNU के थ्रू अपने क्लाइंट्स को भी लाने के लिए पूरी तरह से आप कोशिश, पुरजोर आपकी कोशिश है सर, and I think so you are utilizing in a most well regarded manner all this thing. So thank you for your sharing, sir ji. Srinivas ji, I come back to you now and I am clubbing two questions together for you. One is how you ask the tough question to your clients. Generally क्या होता है, कुछ ऐसे tough question होते हैं regarding my retirement. If you will speak to me, I may not feel necessary कि मैं आपको आंसर करूं, यार मैं मेरा करेंट मंथली एक्सपेंस कितना हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, इसको अक्यूमुलेट करने के लिए मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ। सो उन टफ क्वेश्चंस को आप कैसे हैंडल करते हो विद द हेल्प ऑफ दिस टूल, या कैसे वो क्वेश्चंस को आप पूछते हो। और दूसरा मेरा सवाल इसी के साथ मैं क्लब करता हूँ, वो है बिहेवियरल पैटर्न के बारे में, कि जब आप इसको यूटिलाइज कर ही लेते हो तो लोगों का रिएक्शन क्या होता है।
आफ्टर मैपिंग द गोल, राइट, आपके इन्वेस्टमेंट को गोल के साथ आपने जब मैप कर दिया, तो उनके बिहेवियर में क्या पैटर्न में चेंजेस आता है? आपने थोड़ा पार्सली इसको आंसर पहले करने की कोशिश की। इफ यू कैन एलाबोरेट विद वन ऑफ द एग्जांपल्स आल्सो, कि भाई मेरे गोल्स को आपने लिंक कर दिया मेरे इन्वेस्टमेंट के साथ, तो मेरा बिहेवियर कैसे बदल जाता है? मतलब इज इट हेल्पिंग अस इन बिहेवियरल फाइनेंस आल्सो और नॉट? Yeah, sure. So let me answer the second question. So क्या होता है, once this goal is mapped and the client has bought that idea, right? So he gets emotionally attached to his dream. See, I think that is a very important part, because क्या होता है, कभी कभी गोल अचीव होना नहीं होने में one of the big reason is emotional attachment. If you're emotionally attached to something, there is a high probability that you will reach that goal. For example, when I did my Comrade, that 90-kilometer run, uske pehle I did my first full marathon, right? So generally Comrade कोई भी अटेम्प्ट करता है ना, वो 2-3 फुल मैराथन किया रहेगा, 2-3 साल से अच्छे भागते रहेंगे, बाद में वो सोचते हैं करने के लिए, राइट? सो मेरे केस में मैंने एक फोन कॉल में मेरा रनिंग मेंटर को फोन किया, मैंने बोला सर मेरे को ऐसा लग रहा है, कर सकता हूँ कि आपको क्या लगता है? उन्होंने बोला 3 महीने तू प्रॉपर्ली प्रैक्टिस किया तो कर सकता है. द डिसीजन टुक ऑन द फोन कॉल, राइट? And in that 3 months, I had to run 1,000 kilometer in the peak summer of Bombay. You guys know Bombay ka summer kaise rehta hai, right? So where I had to run this 1,000 kilometer in March, April, and May, right? So naturally in that journey, there were injuries, there were painful moments, there were times where somebody used to call, अरे मेरा घर का गृह प्रवेश है या मेरा ऑफिस ओपनिंग है, I used to say no to them, right? So because I was emotionally attached to boss, ये मेरे को करना है, तो this 3 months I have to live the life of 3D: discipline, dedication, and determination. Right? I have to say no. I have to be determined to stick to my plan. Right? So क्यों होता था कि मेरा एक emotional attachment था that बस मैं कभी complete करूँगा ना, मैं India flag से I will finish my race. So that was used to give me a high. Whenever मैं practice में उसको visualize करता था भागने टाइम पे, मेरे को आंसू आता था. I used to literally cry. Right? So that was something beyond money, beyond anything else. Sometimes वो कुछ अलग energy होता है वो, right? That is sometimes difficult to describe also. The same kind of emotion, if you can, this goal mapping, the family needs utility has that future in it, right? हम क्या करते हैं, कोई client का फोटो भी डाल देता है उसमें, किसी का बच्चे के साथ फोटो है, किसी का हस्बैंड वाइफ का फोटो है, वो क्या होता है, उसको और ज्यादा वो इमोशनली उसमें कनेक्ट होता है, ये मेरा फैमिली है, राइट? फैमिली का वो जर्नी है, राइट? उसमें क्या होता है, वन इज he is nudging him to save more so that he will reach his goal as fast as possible. Another is when the redemption comes, there at least there is a one thought of him that यार मैं कर रहा हूँ, ठीक है, बट ये मैंने बार इसके ऊपर हमने बात कर रहे थे मेरा ये गोल पूरा करने के लिए, लेकिन अभी मैं रिडीम कर रहा हूँ, मैं सडनली मेरा घर परचेज का मेरा एक सडन प्लान हो गया. At that time, see, still some people will go and redeem, but सामने से client ये भी बोलते हैं, I also understand that we are removing the money, but we will increase the SIP, या we will, मेरा कुछ bonus आ रहा है, मैं ज्यादा जाके डालूंगा, right? So that way the client become more aware of his mistakes of deviating from the plan, and also becoming little more motivated to save regularly and save wherever possible, right? So this is how I've seen the change in the behavioral pattern of the client. So coming back to the first question on asking about retirement part or any part, to be honest, I have not found any difficulty as such, because ये नया client होते हैं, कुछ meeting वगैरह होते हैं, पहले उसको educate करते हैं, like अपना NJ का presentation है, gap PPT, वो सब देखने explain करने के बाद, then we'll take some basic details from him, right? उसका name, date of birth, existing investments उन्होंने क्या किया, उसका क्या goals है, right? So generally लोग बोलते हैं ना, हाँ मेरा एक दो टाइप का इन्वेस्टर होता है according to me, whatever I have experienced. One type of investor talks traditionally, मेरा रिटायरमेंट के लिए करना है, बच्चे का एजुकेशन वगैरह. There are other set of investor who doesn't believe in goals. बोलते हैं कुछ गोल नहीं है. Then I tell them that okay sir, no problem, but आप just imagine say in 10 years from today, where you want to reach, आप कितना wealth you want to create, right? So I ask them a figure, they will give a figure, then using that figure we'll put in a SIP dynamic LC. So उसमें हम दिखाते हैं उसको अलग अलग, ये पॉसिबल है कि आपको इतना कर सकते हो क्या, based on the figure.
अभी कोई लोग ऐसे भी फेंकते 100 करोड़ करना है 10 साल में, राइट? व्हेन आई शो दैट आपको 20 लाख 25 लाख SIP करना है, देन अब नहीं इतना तो नहीं होगा, then we'll make him more practical, right? So then he comes on the okay, ठीक है, practically इतना possible है. So that's where the idea is to, as our friend from Manvi, he was saying that it's whether it is a HNI or a middle or a retail investor, the idea is that the definition of goal is how much by when, right? ये retirement बोलो, education बोलो, wealth, everything has a ultimate thing is how much by when, how much amount I need, when I need, and for what purpose. That is you have given a name as retirement, but ultimately वो पैसा और कभी चाहिए ना, right? So I tell them goal is means how much by when. So इसको define कर लेते हैं, then it is easy to measure. If you don't define your outcome, then मतलब measure ही नहीं होगा ना उसको. Quantitatively you have to try and get it in some place, and then only it has client also is able to understand, ठीक है बाबा ये मेरा journey है, this is what I'm measuring against. Yeah, so what I can feel out of your answer is that it helps you to bring your customer on the rationality, right? What they should be rational, what amount of SIP should be the rational amount of SIP to do particular goal, right? जैसा कि आपने बोला कि मैं SIP डायनेमिक कैल्सी में भी डाल के देख लेता हूँ कि भाई ये अचीव करने के लिए इतना SIP चाहिए, बट शायद आप नहीं कर पा रहे हो तो उसको थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं गोल जो होने चाहिए उससे, तो बीच वाला फिगर सेट हो जाता है, राइट? So what I can say कि if somebody is doing an SIP of say for example 5,000 rupees without any planning, right? But if as a partner you are using this tool to relate that SIP for a particular goal, then that SIP can go up from 5,000 to say for example 10-12,000 rupees, although the requirement can be 15,000 or 20,000. Recently, I'll share one case study. Recently, I was sitting with a CFO of a very large MNC. Okay, she's a very young girl. At age 34, she became a CFO of a very large brand. Okay, so she already had an advisor who happens to be her classmate. Okay, but for some reason, I met through her mother, and then मैंने कुछ certain चीजें हमने share किए, and then she was kind of she wanted to work with us. राइट, सो उसमें अपना गोल मैपिंग पार्ट भी मैंने बोला था. सेम स्टोरी, वो मेरा एक क्लाइंट है 5 साल पहले वाला, वो स्टोरी तो हम सबको बोलते हैं. सो एंड देन व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट एसआईपी कैल्शियम में मैंने दिखाया देन आपको 10 साल में किधर पहुंचे, शी सेड अराउंड 10 करोड़, राइट? सो देन 10 करोड़ के लिए मैंने उसमें दिखाया आपको, देन इधर इतना अमाउंट आपका ऑलरेडी शी हैड समथिंग इन एफडी, समथिंग विद म्यूचुअल फंड. सो इतना दिस मच अमाउंट इफ यू मैनेज इट वेल, दिस विल बिकम एक्स कॉर्पस. रिमेनिंग वाई कॉर्पस के लिए इतना एसआईपी आपको आ रहा है, 2.5 लाख कुछ आ रहा था उसमें, राइट? सो उसका कैश फ्लो में उतना नहीं दिख रहा था. मैंने वीडियो कैश फ्लो एक्टिविटी थोड़ा टाइट था, बट इसमें मैंने दिखाया ना उधर मैं 2.5 लाख कर सकता हूँ. समटाइम्स व्हाट आई हैव सीन इन माय एक्सपीरियंस ना, मैंने भी बहुत गलतियां किया है, दैट कभी-कभी मैं क्लाइंट के सामने मैं डिसीजन ले लेता हूँ, सर आप लाख रुपए कर सकते हैं क्या? ऐसा भी हो सकता है बहुत टाइम वो 2 लाख करने को भी रेडी रहता है, राइट? इट्स कॉन्शियसली वी हैव टू कीप टेलिंग दैट बॉस तू मत बताना, उसको बोलने दो, राइट? बार-बार कभी-कभी गलतियां होते रहते हैं, बार-बार द गलतियां मिस्टेक कम होता है, बीइंग मोर अवेयर, राइट? सो देन दिस गर्ल मेड एसआईपी ऑफ 2.5 lakhs, राइट? Great learning, sir. Thank you for this example, sir. It's a wonderful example and certainly जो आपने बोला वो सही है कि कभी-कभार हम ही लोग क्लाइंट को अंडर एस्टिमेट करते हैं and we just go with that our own biases and we just share those biases कि भाई 1 लाख का SIP तो ये कर ही डालेगा ऐसा. So I come to the next question to नरेंद्र जी, आपके पास आता हूँ मैं. My question to you is with regard to the frequency in which you do the goal review. Basically, once you have mapped the goal and you are the person जो सबका goal map करके ही business कर रहे हो, तो आप how do you change the goal in between also? Maybe you can see the progress is not happening that much, right? Maybe you feel there has to be some kind of review in this goal which we have planned for the client. So आप कैसे in what frequency you just review the goal and you revisit the plan with the client? Generally, there are two instances where we review the goals. So one is we have set a frequency. We have categorized our customers into A, B, C, D categories. So for A and B, we go for the review on a frequent basis.
maybe 6 months. Once in 6 months, we review the goals. Like we see the goals, and we speak with the customer. Like whether there is any gap in between for any specific goal, or anything is already they were about to reach that goal. So those discussions will happen once in 6 months for A and B category clients, and for C and D category customers, we do once in a year. This is one instance where we do on a planned basis. There is one more instance where, like, we generally, whenever we feel there is a correction in the market, then we take that as an opportunity. Or whenever we feel the business flow is very low, then we take that opportunity and we take the customer's review sheet. Like, we go to the client desk and we open the family need report, and then we open the report and we talk to the customer. Before we call the customer, we send a report. So this is the status of the current your goals. So there is a gap for these goals. If you feel like you have a surplus which is available due to current market conditions, we feel there is a great opportunity to make more money. So in this way, we initiate the conversation and we close that. In most of the instances, when we talk about the goal and we ask for the business, generally customer don't feel bad. He always have a positive corner about the advisor as well. He always talks about my needs, my responsibility, my goals. So kind of an attitude will have to the customer as well. And this will also help the advisor to anchor the customer. In these days, like, we have many challenges, like why should I invest through you? Why can't I hire a RIA? Or why should I go for why don't I go for an direct plans instead of a regular plan? And they always wanted to see what value addition an advisor is offering or an MFD is offering most of the times, most of the clients. So when we start religiously practicing this family needs and updating this to your customers on a regular basis, believe me, customer, he himself will find a value addition. If he still feel like there is no value addition besides giving you this data, then you have to give the call to the customer. Yeah, so Narendra ji, you mean to say if somebody practice NJ tools, somebody practice other than financial calculation with the customer, not only the financial calculation which is related to returns or something, if you do some other kind of subjective value addition in front of your customer, that can help you to answer the questions which comes generally direct versus regular or something like. So that is what you mean to say. Yes. Right. Okay. So आपने कभी ऐसा किया है कि किसी client का goal है? Yeah, I'll just ask you in English. Have you ever tried, like, if I'm just near about to my goals will get achieved easily with this kind of planning. So did you try to modify the goal of the customer, try to make it more challenging for the customer? Have you ever tried that? We generally play with this inflation rate and the percentage of returns in rate of a customer based on his ability to invest. If we feel like the customer is capable of investing more amount, then we make inflation to a 1% higher. Like, for usually most of the customers, we take inflation at 6 to 7%. For the people whom we feel that he is capable and he can invest a little more than the regular people, then we keep inflation at 8%. And for those people, we also reduce the return rate, expected rate of return, to 10% or 11%. So in that way, that is helping us to get big size of investments as well. Okay, so आपने मेरा क्वेश्चन ही ले लिया. Basically, I wanted to ask this question to Sunil sir. Basically, कि how do you set the rate of return and something? But anyway, you're right, sir. Whenever you are setting the expectation for the customer, then you should set it for the little bit of conservative returns, so that if the goals can be achieved with higher return, then we should keep it conservative so that it can be achieved easily. The gap can become more thinner, right? So I'll come back to you, Sunil sir, to you now, right? Yes. So as you rightly said, it is not our need, right? It is the need of our client, right? So कि क्लाइंट की जरूरत है, उसके गोल अचीव करना उसकी जरूरत है, वी आर हेल्पिंग देम, राइट? सो आपने ये शुरुआत जब FNU नहीं था, हमारा फैमिली यूटिलिटी का टूल नहीं था, तब भी आप इसको यूज करते थे इन योर ओन वे थ्रू एक्सेल और समथिंग, राइट? सो आपने लोगों की एक्सपेक्टेशन, आई थिंक सो, शुरुआत से ही सेट करके रखी हुई है कि दिस इज व्हाट दे हैव टू डू एंड दे हैव टू अचीव इन दिस वे ओनली. सो माय क्वेश्चन इज टू यू इज, हाउ डू यू सेट दोज एक्सपेक्टेशन इन फ्रंट ऑफ कस्टमर, राइट? कि भाई वो इससे बंधा रहता है, वो बाहर नहीं जाता है, या कभी आपसे वो सवाल नहीं करता है कि आपने हमारा रिटर्न्स नहीं आ रहा है, आपने तो हमें ये प्रॉमिस किया था, ये नहीं हो रहा है, राइट? ये आगे भी होगा कि नहीं होगा, राइट? सो
बीइंग एन एक्स आर्मी मैन तो आप थोड़े तो टफ रहेंगी आई थिंक सो कस्टमर के सामने, तो वो आप कैसे करते हो सर? थोड़ा वो शेयर करें तो इट विल हेल्प ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि एक्सपेक्टेशन कैसे सेट की जाए विद रिगार्ड टू द गोल अचीवमेंट। जी जरूर। तो इसमें कोई डरा के धमकाने की कोई बात नहीं आती है। जब हम बात करते हैं कस्टमर जीवन के बारे में बात करते हैं और वहां से उन्हीं को आई थिंक सो सर आपकी वॉइस जा रही है। धीरे सुनील जी धीरे करके जी सर आपका वॉइस गया था, कैन यू जस्ट गो अगेन, गो बैक। ओके विल गो अगेन। सो ये बड़ा सरल है, इसमें कोई पेचीदा मामला नहीं है। तो जब हम एक्सपेक्टेशन सेट करने की बात करते हैं तो ये शुरुआत होती है लोगों के साथ बैठ के उनके जीवन के बारे में बात करो। पैसा एक उसका अहम हिस्सा है और बात करते करते उनकी नीड्स रिक्वायरमेंट्स को समझना ये उस चर्चा का भाग होता है। As we build that conversation to understand what they expect out of their own life, you know, those then need to be applied to a template called as what in terms of money it means. उसके लिए कितना पैसा चाहिए। तो जितनी जितनी उनकी रिक्वायरमेंट्स है, गोल्स है, हर एक का आकलन करके या इवेल्युएशन करके वी कम टू अ फिगर, ओके यू नीड टू हैव this target amount by this target month and year, and that automatically gives you the investment horizon. And then we come to the last thing is to achieve that हमें क्या करना चाहिए। अगर हम लमसम लाते हैं तो इतना चाहिए, अगर हम पीरियोडिक मंथली एसआईपी करते हैं तो उसके लिए इतना चाहिए। और ये जब सारी जरूरतें क्लियर हो जाती है आपका एफएनयू यूटिलिटी का पूरा खाका बन जाता है। आपका एक टेबल आपका तैयार हो गया सारा, और इसमें आपको कुछ अलग बताने की जरूरत नहीं होती है कि एक्सपेक्टेशन क्या है। तो आगे चल के बात ऐसी होती है कि मानो आपकी एसआईपी की रिक्वायरमेंट 50,000 है, जैसे मैंने पहले कहा, कैपेसिटी 40 की है, और अगर अंडर पिच कोई करना चाहता है, 20 करना चाहता है या 25 करना चाहता है, तो हम छोटी सी उनको एक बात सरल सीधी पूछ लेते हैं कि आप अंडर पिच करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको डिले कॉस्ट के बारे में कोई जानकारी है क्या? तो आमतौर पर सवाल ये आता है कि ये डिले कॉस्ट क्या होता है। तो डिले कॉस्ट बता देते हैं कि आप कैपेसिटी है, नहीं कर सकते हो, और 2 साल या 3 साल आप प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे या इसका विलंब इसमें लगाएंगे आप, तो आपको और भारी पड़ेगा ये। तो डिले कॉस्ट से ये रियलिटी के साथ जुड़ने की प्रक्रिया ज्यादा अच्छी होती है और वहां पे कमिटमेंट भी क्रिएट हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कैपेसिटी कम है और आपके ड्रीम्स या एस्पिरेशंस व्हिच आर कन्वर्टेड इनटू गोल्स मे बी टुवर्ड्स अनरियलिस्टिक डायमेंशन और टू द साइड। इन दैट केस वहां पे कैलिब्रेट करना जरूरी है। ये भी हम गाइड करते हैं उनको, बिकॉज ज्यादा गैप होगा तो नेचुरली इट इज लाइकली टू रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ अ स्ट्रेस। आवर रोल इज नॉट टू क्रिएट स्ट्रेस और प्रेशर इन द माइंड्स ऑफ आवर कस्टमर। अगर वो तनाव में आ जाए या भयभीत हो जाए तो फिर जो करना है उसके लिए भी उसको शायद झिझक रहेगी। तो तनाव भी कम करे, कैपेसिटी को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की तरफ ले जाए और रियलिस्टिकली सेट करे। गोल तो उन्हीं के होते हैं। हम कहते हैं कि आपका जीवन है, आपका पैसा है और आपके सपने हैं। इसको सही तरह जोड़ने में और एक अच्छा आपका इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने में हम आपके साथ बैठ के आपकी मदद करेंगे। एंड ये आसानी से हो जाता है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। और इस कॉन्वर्सेशन में कोई इंटिमिडेशन करने की जरूरत नहीं या कोई भय दिखाने की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ownership of the plan by the customer is possible only when he is fully convinced and motivated to have it. So we focus on our effort in ensuring that he is adequately motivated. We convince him that he has sufficient amount of best technology platform in terms of FNU or FNPR.
and by using that, if he brings his commitment to the plan, there are very, very high chances of him succeeding. And naturally the factors like market से return क्या मिलेगा, इकोनॉमी का क्या होगा, ये तो सारे फैक्टर्स हमारे कंट्रोल के बाहर हैं. तो बजाय उन पे ज्यादा समय लगाने के, हमारे अपने कंट्रोल में क्या है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके उसी में समय लगाना हम समझते हैं निवेशक के लिए या कस्टमर के लिए भी बेहतर है और हमारे लिए भी ये सही है. यस, राइटली सेड सर. आपने काफी सही तरीके से बताया कि कुछ चीजें जो हमारे हाथ में नहीं है उनके ऊपर डिस्कशन करने से कुछ हल नहीं निकलेगा. यदि कस्टमर को ये समझ में आ गया तो आई थिंक सो आवर जर्नी विल बिकम मोर स्मूथर. एंड आई थिंक सो द जर्नी विच वी आर जस्ट हैविंग नाउ, द वेल्थ क्रिएशन, राइट, क्रिएटिंग वेल्थ, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, एंड लोगों का वेल्थ क्रिएशन, लोगों को सही टाइम पे पैसा मिले, सही टाइम पे उनका गोल अचीव हो, द मनी दे वांट दैट टाइम मिल सके. उस चीज के लिए यदि लोग डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है. एक सवाल क्विकली, बिकॉज टाइम इज रनिंग शॉर्ट, बट स्टिल आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. 100% कस्टमर तो हमारे आज भी शायद FNU मैप्ड नहीं होंगे. देयर आर स्टिल फ्यू कस्टमर दोज हु आर नॉट मैप्ड. तो आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है, क्योंकि आपने काफी बड़ा एक्सपीरियंस लिया है इस पर्टिकुलर टूल का. आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको क्या लगता है कि जिसने FNU के साथ गोल मैपिंग किया है तो उसका एवरेज टिकट साइज क्या है, और जिसने नहीं किया है उसका एवरेज टिकट साइज क्या होगा? अमाउंट बताने की जरूरत नहीं है, बट डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज यू कैन डिटरमाइन. लाइक श्रीनिवास जी के केस में अलग निकलेगा अमाउंट, नरेंद्र का अमाउंट अलग निकलेगा, although your live SIP book is the same, right? But still I just wanted to understand, right? So हम लोग we keep telling in all the partner meet and something, use the FNU, your SIP amount will go up, right? So Srinivas ji, your opinion with regard to this average ticket size for non-FNU customer and FNU customer. I'll try and answer this question in a different way, because ultimately the objective is that probably try and motivate partners to use this utility, and so that that valuation should go to the client, right? So आप I think सबको ये 83 मूवी तो देखा रहेगा रणवीर सिंह का, right? 83 वर्ल्ड कप, right? उसमें एक पर्टिकुलर सीन है, एक टैक्सी ड्राइवर, वो BCCI का चीफ, ही टेक्स हिम टू दैट स्टेडियम. वो बोलते 5 मिनट आ जाता हूँ, वैसे भी लोग हार रहे, 5-6 विकेट हो गया, अभी तो खत्म हो जाएगा मैच, मैं आ जाता हूँ, तू इधर ही, यू वेट फॉर मी, राइट? सो ऐसा बोल के वो ही गेट्स इनटू द स्टेडियम, राइट? एंड दैट्स वेयर द कपिल देव स्टार्ट्स, एंड दैट 176 इनिंग्स, वो मैच लंबा जाता है बाद में, बराबर? याद है वो मैच, राइट? सो बाद में वो बाहर आता है, वो बोलते हैं ऐसा कैसे हो गया, बिल इतना हो गया. देन नेचुरल तो मीटर डाउन था ना, उन्होंने तो मीटर बंद ही नहीं किया, इसको लगा 10 मिनट में आ जाता हूँ, सो मीटर डाउन करके गया था, राइट? सो इफ यू टेक अ पैरेलल ऑफ दिस स्टोरी ना, ये टैक्सी का, इफ यू सी एज अ टैक्सी ड्राइवर, he will earn money as long as the meter is down, right? So our business, we will create wealth, or client will make money as long as he stays invested, right? The client will stay invested only if he is attached to his goal, बराबर? आप वो गोल के साथ क्लाइंट को अटैचमेंट ही नहीं करा है तो क्लाइंट भी हर टाइम पे सोचेगा मैं निकल जाऊं क्या, मार्केट ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग करूं, 2 साल का रिटर्न नहीं तो मैं FD ही बेटर है, उधर चले जाऊं, बराबर? सो आपको ये स्टोरी याद रखना, 83 वर्ल्ड कप वाला मीटर, टैक्सी मीटर डाउन, राइट? सो यू आर इन अ बिजनेस ऑफ ए टैक्सी बिजनेस, समझ लो मीटर डाउन है तो अपना क्लाइंट का भी पैसा बनेगा, आपका भी बिजनेस चलेगा, राइट? सो उसके लिए देयर इज नो बेटर यूटिलिटी देन फैमिली नीड्स यूटिलिटी, व्हिच विल मेक दिस बिजनेस वर्क वंडर्स. Right, sir. Thank you for sharing a nice example, sir. Narendra ji, and your views with regard to this? So it is obviously known to everyone, like one who uses the family need utility, definitely the productivity of the business goes up and the revenue is tend to go up. I'll take a couple of minutes to tell you a point here. When you use the family need utility, as Srinivas sir said, like before family need, before talking about the goals, if we ask the customer how much SIP can you start,
ideally customer can say based on his experiences and ability, he may say a number which may have some relevancy or which may not have some relevancy. But once after you show him the needs, and once after you create him a goal or a target, obviously your SIP amount has tend to go, and that will have more productivity as well. In the same way, once you start mapping these goals and religiously, once we start following this now, it will help you in stopping your redemptions as well. So how come a redemption can be stopped by using a family need utility? Why? Because if the goal is about to reach the targeted time period, or if customer is seriously tracking his goals, or he is very emotionally attached with his goals, then he'll try to utilize LAS option rather than redemption. So in that way, if you use family need utility, you could able to save your trade. At the same time, you could able to increase your revenue with the help of LAS income also. So that is one good point. Right. So it helps even to cross sell the other product, right? So Yes. अदर मेरे को SIP बड़ा तो मिल ही सकता है, लमसम ज्यादा तो आ ही सकता है, रिडम्पशन रोकने के लिए LS भी हमारा बहुत अच्छी तरीके से हम लोग यूटिलाइज कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ इट. सो ग्रेट लर्निंग आउट ऑफ इट सर. लास्ट 2 मिनट्स सर, आई विल गिव इट टू यू सुनील जी विद रिगार्ड टू द सेम पॉइंट. आपका दृष्टिकोण क्या बोलता है इसके ऊपर? देन आई विल जस्ट सम अप द सेशन. जी, तो आपने कहा कि 2 कस्टमर है, एक ने फैमिली नीड यूटिलिटी उसका बन गया है और उसके हिसाब से कार्यक्रम चल रहा है. दूसरा कस्टमर है जिसको वो नहीं है या गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है. तो फर्क क्या पड़ेगा? यहाँ मान के चलते हैं कि दोनों की कैपेसिटी टू द ऑप्टिमम है, ऑलमोस्ट इक्वल टू नीड है. तो ऑलमोस्ट इक्वल टू नीड है और फैमिली नीड यूटिलिटी ड्रिवन इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो नेचुरली 100 सेंचुरी मार देगा वो. और जिसने इसका फायदा नहीं लिया हुआ है वो शायद, और ये मैं रियलिस्टिकली बोल रहा हूँ हमारे अपने एक्सपीरियंस में, जहां पे कैपेसिटी है लेकिन कहीं पे प्रोक्रेस्टिनेशन है या हेजिटेशन है फॉर सम रीजन, एंड दैट इज बाय लॉ ऑफ एवरेजेस, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, तो वहां पे जहां 100 बना रहे हैं वहां पे 35-40 ही बन रहे हैं. तो अंतर बहुत बड़ा है, अंतर बहुत बड़ा है. और ये अंतर ज्यादातर लोगों को 2 या 3 साल में समझ में आ जाता है कि ये डिले कॉस्ट उन्होंने इनवाइट कर लिया है और वो लॉस को भी उन्होंने इनकर कर लिया है. तो बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो जाता है, बहुत ज्यादा मायना रखता है ये. Okay, sir. Thank you, sir, for the sharing and giving too many good points to learn to all my partners. To across Pan India partners are joining this session and they are learning a lot. मैं अपनी तरफ से 2-3 बातें जस्ट ऐड करना चाहता हूँ कि रिसेंटली वी हैव रिवाम्प दिस FNU. तो उसको हमने ई-वेल्थ लेवल पे लेके उसको रिवाम्प किया है कि नाउ द कस्टमर एट कस्टमर एंड आल्सो द FNU कैन बी यूटिलाइज्ड, राइट. तो आई वाज चेकिंग वन ऑफ द डेटा कि जो हमारे पार्टनर्स ने जो FNU को यूज किया उससे डबल हमारे क्लाइंट्स यूज कर रहे हैं आज के डेट में उस डेटा को. तो मोस्ट ऑफ योर क्लाइंट विल यूज दिस एट देयर ओन लेवल यदि आप उनको इन्फॉर्म करेंगे अबाउट दिस फैमिली नीड यूटिलिटी. तो वन थिंग इज दैट कि आपको सिर्फ उसको स्प्रेड करना है कि आप आपके गोल अचीवमेंट को टैग कर सकते हो. हमने इसके अंदर 2-3 अच्छी चीजें जो की हैं कि एक तो क्लाइंट को एक्सेस दे दिया है, दूसरा हमने क्या किया है कि इसको ई-वेल्थ डेस्क को एक्सेस करने के लिए पार्टनर कैन आल्सो यूटिलाइज, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसे सवाल पूछे हैं. तो आई जस्ट वांटेड टू आंसर देम कि आपकी पार्टनर डेस्क के अंदर से जाके क्लाइंट सर्विस में आप डायरेक्टली क्लाइंट का ई-वेल्थ डेस्क एक्सेस कर सकते हो और उसका आप गोल टैगिंग कर सकते हो. दूसरा अच्छी चीज उसके अंदर ये भी है कि आप क्या कर सकते हो कि उसके अंदर हम लोगों ने कुछ इनबिल्ट गोल प्लानिंग कैलकुलेटर बना के डाल दिया. मतलब वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि दीज आर द गोल्स इन वन समवन्स लाइफ. तो आप डायरेक्टली वो गोल को कैच करके उसके ऊपर अपना जो भी गोल आपको अमाउंट डिसाइड करना है आप अपना कस्टमाइज भी कर सकते हो और कुछ प्री डिसाइडेड भी आ सकता है. तो ये कुछ अच्छे इंप्रूवमेंट उसके अंदर किए हुए हैं जिनका आप सही तरीके से यदि उपयोग करेंगे, सही तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे, तो जो हमारे पैनलिस्ट ने अभी अपने इसके बेनिफिट्स के बारे में डिस्कशन किया कि उनको इससे काफी बड़ा फायदा मिला है, उनको SIP बुक बड़ा करने में काफी फायदा हुआ है, उनको क्लाइंट्स को हैंडल करने में काफी फायदा हुआ है.
एंड उन्होंने उस क्लाइंट, जैसे श्रीनिवास ने बोला कि हमने अपने एक क्लाइंट का FNU का जो गोल अचीवमेंट है या गोल टैगिंग है उसको भी दूसरे के सामने शोकेस करके भी कस्टमर, प्रोस्पेक्ट कस्टमर के साथ बात कर लेता हूँ कई बार। क्लाइंट्स का SIP बढ़ाने के लिए हमारा ये जो रैंडम वर्सेस प्री प्लान्ड डिसाइडेड गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट है उसमें हमारा वैल्यू बढ़ता है, वो सब भी आपका फायदा इसके अंदर होता ही है। So the good part of all these three panelists is that they have a strong belief, right? The tool is really good, and the tool is helping. The data is itself showing that tool is helping, and how it is helping, I'll tell you in a data format only. If you look at the SIP book of all these three people are 1% of the live SIP book of their AUM. It means their growth from SIP is coming out 12 to 13%, right? Plus, what we can say, the another 12-13% growth can come with the help of investment through some kind of lump sum money, some kind of, you can say, mark to mark growth. So the overall growth a partner can have close to 25-26% of the growth annualized basis यदि ये live SIP maintain होता है तो आपको यदि ऐसा कोई भी टूल आपकी SIP बुक बड़ा करने के लिए या आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए हेल्प कर सकता है तो उस टूल को एक्सटेंसिवली यूज करना चाहिए। If these are the partner who are using this tool, if I just want to forecast their business in next 10 years, it will be 10x because their growth is close to 26% per annum with an average growth of 10x in 26% per annum means in 10 years your AUM will be 10 times, right? So currently they are sitting as 250 crore of AUM, they will be at 2500 crore, right? So this is the kind of data, this is the kind of calculation we can forecast on your AUM, provided you love the tool. You should be very clear to understand that this is the tool which is helping our business only, helping our clients also, right? So this is our request only at NJ, यदि आप इसको यूज करते हैं तो इससे काफी बड़ा फायदा आपके बिजनेस में हो सकता है। कुछ हमने सवाल देखे, सारे सवाल हमारे जो है ना ऑपरेशनल हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर आस्किंग द ऑपरेशनल क्वेश्चंस एंड दोस ऑपरेशनल क्वेश्चंस आर लाइक कि इसको मेरे को यूज कैसे करना है, मैं अपने गोल कैसे टैग कर सकता हूँ किसी क्लाइंट के। तो ये सब जो है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लोकल लेवल ऑफ ट्रेनिंग ऑल्सो, एंड वी हैव ऑल्सो डन द ट्रेनिंग ऑन डिजीटॉक्स ऑल्सो हाउ टू यूज ऑल दिस। बट ये आपको लोकली हमारी जो भी एनजी की ब्रांचेस हैं वहाँ पे आप कनेक्ट करें, आपके रिस्पेक्टिव यूनिट मैनेजर, एजेंसी मैनेजर के साथ कनेक्ट करो, they will help you to understand how to use this particular utility. Today the objective was whether you should be convinced on this or not, and somebody who is having a good AUM and good live SAP book and using it and unko iska fayda hua hai, so that is the learning to all of us have, and we should take it forward. Last but not the least, I want to thank you all the panelists. Thank you for coming and giving your precious time. You have spoken from your bottom of your heart and आपने काफी दिल से बात की, काफी दिल से आपने शेयरिंग किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ सर। एंड उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, एनजी थैंकफुल है, एंड होपफुली ऑल माय पार्टनर्स विल use this session as a learning, and they will take it forward to their clients, and they will utilize it in a big way and will generate good business. So thank you once again. With this, I think so any message you want to give, so you can also give, sir. We have last 1 minute then. With no filter, start using it. You'll enjoy the benefit. Thank you. Thank you. So with this, we will end our session over here. Thank you. Thank you.